Hello, hello, hello. dell event. We are thrilled to have you join us today as we embark on a journey of discovery and exploration of the latest technological advancements. To commence our event with a sense of reverence and spirituality, it is our privilege to invite Maulana Qari Abdus Salam to come onto the stage and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Subhanallah and Jazakallah khair. It was a lovely recitation. Ladies and gentlemen, we once again welcome you back to the event, Power Your Innovation with Dell. Without further ado, please join me in giving a warm round of applause as we invite Mr. Noman Ahmed Saeed, the CEO of SI Global Solutions, to the stage. Let us eagerly embrace the opportunity to hear his thoughts, transformative insights, and the exciting prospects that lie ahead. A huge round of applause for Mr. Nomad Ahmed Saeed. Assalamu alaikum and good evening everyone. It is my honor to stand before you and say few words because you are our customers and I'm happy that all our happy customers are sitting here and I'm very thankful to Dell team who came all the way from Lahore for this event. The idea is to introduce new technologies that can help you increase your ROI. That's the basic objective of this event and that is the theme. And I want you guys to take this opportunity and see how you can, pave the way for a new solution because these days innovation is the key. Also, I will try and take a note. Happening now is we are not focusing towards our investments on innovation and R&D. So I think it's we come out of the traditional methodologies and use new techniques, new methods, and try and take the opportunity of the technology, especially those which are helping other customers also. So the advantage as SI Global that we have is that we are a system integration company, we are an application company, we are a consulting company, we are a trading company, we provide maritime security, and we have 650 satisfied customers across the globe, in Europe, USA, Pakistan, you name it, and we have it. So that's our strength. And we have Dell with us, a very strong manufacturer who provides solutions every year. And every quarter there is something that comes up which brings uniqueness to you so that you can enhance your return on investment. With this, I welcome you all and I hope that this journey will transcend you into something which brings new innovation to your systems. And before that, I would say Karachi is the hub of technology experts. So take this opportunity and enjoy the show. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much, Mr. Noman Ahmed Saeed, for your valuable contribution to our event. Your presence and insights have made a significant difference. Our next distinguished speaker brings a wealth of experience and expertise in the field of EUC solutions, and we are privileged to have him join today. With his extensive knowledge of Dell Technologies' EUC portfolio and his deep understanding of the evolving workplace landscape, please join me in extending a warm welcome to Mr. Khallat Khwaja, Head of Business Development at Dell Technologies.
A huge round of applause for Mr. Khalad Khwaja. Hello, hello. Can you hear me? Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. First of all, I would like to thank you on behalf of Dell Technologies for taking your time out from your busy schedules and making to today's event. So, in today's conversation, I'll try to share with you the latest technologies that Dell has introduced globally and how these technologies can help you, right? They say every company has different objectives and different goals. So let's say, do you agree that every company has different goals? जी, माइक दे दें मुझे. जी, anyone would like to keep it a very interactive session? So please feel free. Do you agree that every company has different goals? Anyone volunteer? What do you think? अपनी opinion देनी है. Yeah, Feel sure. free. What do you think? I purely aligned with your remarks that sort of banking sectors have more focused on the data side and retail industry has more focused on the e-commerce side. Okay, but overall high level objective, high level goal, high level business. Do you think every company has different goals? Or what do you think? They should be different. Okay, anyone else? Any other thoughts? जी. Different goals. Different goals? Good. अच्छा जी. So we are having a unanimous feedback कि जनाब every company has different goals. आपकी क्या राय है? I think every company has the same goal, that is profitability. जी. Every company has the same goal, that is the profitability. माशाल्लाह, जबरदस्त. Give him a big round of applause. So thank you very much. आप तमाम लोगों की feedback I think is similar. We think differently. The overall high level goals are same. Strategies can be different, right? And we are all in different phase of our path to our strategic vision. So the overall high level goal of every company is to make money. Do you agree? Actually, we have like banking sector, we have education sector, we have people from hospital industry, right? Education sector ध्यान होगी. University से, if you can raise your hand, please. Hospital industry. अच्छा जी. और banking industry. Any other? So if I say that every company has a goal of making money, would it be true? To make money? पैसे कमाना, प्रॉफिट में आना. True? So that's true. Every business has to make money. चाहे आपका no profit no loss है. If you are doing some charity, you have to be in profit in order to execute operations, in order to pay salaries, in order to pay bills, in order to invest in R&D, right? So how can that be done? Only if your company is profitable, right? So we agree, making money or being profitable is the key goal of every company. So when they say that every company has different goals, so I would slightly disagree. Every company, every business is here to make money, but not at the expense of your customers. But not at the expense of your customers. So,
We all, in our individual state, in our individual role, can help our organizations making money. This is not only the role of sales or marketing to bring the company into the state of profitability. कभी आपने सोचा कि IT डिपार्टमेंट का रोल भी like you guys can help your companies to make money? या आप समझते हो कि यार IT डिपार्टमेंट बस साइडलाइन किस्म का है? It was true, I think, around 20-30 years back, जब IT डिपार्टमेंट को समझा जाता था कि बस यार डेटा एंट्री ये वो इस किस्म की चीजें हैं. But today, IT department, IT people are making the difference in company's success or failure by selecting the right technologies, relevant technologies, modern technologies, selecting the right device, having the right set of features, right balance of hardware and software. So I will talk about technologies, I will talk about features, which is going to help you achieve your departmental mission, objective, goals, right? How can you guys in your IT role can help your respective organizations be successful, be in a growth state, be profitable, be the market leader, right? So this is the, आप देखें तो you can see there is a whole range of different type of products. One can think here, what is the fun of having such a broad portfolio? What is the fun of having so many models within each product line? Within each product line, there are so many varieties for you to select and choose. क्या देन में आता है? What is the fun? Think about it. But anyways, I'll come to this later. But the whole idea is to select the right product. Empower the end user with productivity boosting features. So we're talking about the end user that has always been the center point, the focal point. We never spoke about IT guys yet. How to make your life easy. We talk about end user all the time, and that's true. End user, the workforce of your respective organization, and if we go one step ahead, actually, we are trying to focus your end user customer that you are catering, that your organization is catering. If you are in a banking sector, who is the most important person? Customer. We are all fighting for, if you are in university, you would like to have maximum number of students coming. So you have to answer a very basic question, why a customer should come to your organization? What differentiates your organization? IT, architecture, and infrastructure is now the name of the game. The companies who are investing in their tech ability and modernization, workforce transformation are the ones who are going to survive, not only survive but thrive and innovate. Because this is the survival of the fittest. You can't have a laid back approach. You need to be on your toes, you need to be aggressive. You need to go after every customer. So, when you are improving your sales force, your workforce, your employees, and trend has changed over the last 3-4 years after the COVID. So people are having hybrid type of workforce. Some people are working from home, some people are working from office, some people are 50% time. After going to office, don't check your emails, raise your hands. घर जाने के बाद कितने परसेंट लोग ईमेल चेक नहीं करते? प्लीज, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वर्क लाइफ बैलेंस. So like 1 to 2% who don't, I really appreciate. I wish we could have the same work-life balance that you guys are having. I wish, yes. But this is a trend on a global scale. अगर ईमेल नहीं भी चेक करते तो you are checking your WhatsApp या अपने मोबाइल पे you are expand in firefighting, in routine tasks, maintenance. नोटबुक खराब हो गई, आज ये मुझे ठीक कर दें, मेरा OS क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया. When do you have the time to
focus on strategic initiatives. आप लोगों का काम था ना कि यार overall big picture, IT department का role. So how can we make the life of IT people easy? This is in your hands. By selecting the right technologies that not only satisfy the end user but also help the IT department. So you have to focus on technologies that help you save money and time. Money and time, because 80% when you're firefighting, इसकी नोटबुक खराब होगी, उसका वो हो गया, so आपका टाइम ज़ाया हो रहा. जब टाइम ज़ाया हो रहा है, there is opportunity cost. इसकी लैपटॉप खराब हो गई, companies can't afford the employees to sit idle even for 4 hours. The calculation of opportunity cost, पाकिस्तान में भी बहुत कम हम इन लाइन्स पे सोचते हैं कि यार व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हम एक रिसोर्स हायर करते हैं. डू यू थिंक टू गेट ए जॉब इन ए कंपनी इज वेरी इजी? व्हाट डू यू थिंक? कौन सी ऐसी कंपनी जहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है? एनी वन कंपनी जहाँ पे अप्लाई करो जॉब मिल जाती है. कितने ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, एक टेस्ट, 2 टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, HR, ये वो. सो यू सिलेक्ट द मोस्ट suitable candidate. Suitable candidate आ गया, आपने उसको, you can't afford to make him sit idle. If something goes wrong, उसका नोटबुक खराब होगी and he is sitting idle for 3 hours, this is an opportunity cost to your organization. This is one aspect. So when it comes to IT, you have to select the right technology that is able to help you save time and money across management, deployment, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट. 3-4 चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना है. नॉट ओनली टू एंश्योर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्कफोर्स, ये चीजें भी आपने देखनी है. और ये चीजें बैठ के लॉग इन हो रहा हूँ, आज मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, कल मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ. हाउ द हैक डू यू थिंक दिस CSG, दिस लैपटॉप, नोटबुक्स, डेस्कटॉप इज नो ब्रेनर? कभी भी कोई प्रेजेंटेशन होती है, वी टॉक अबाउट स्टोरेज, वी टॉक अबाउट सर्वर्स, वी आर एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू टेक्नोलॉजीज, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट? दैट नोटबुक, Core i5, 8 GB, 256, 15.66 डिस्प्ले, फुल HD. क्या ख्याल है? एनी फीडबैक? डू यू थिंक ये एंड यूजर डिवाइसेज आर इंपॉर्टेंट? When we talk about security, when we talk about management, how many of you agree डेटा सेंटर हमने कायम कर लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए उसके ऊपर, जनाब कूलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. वेयर इज द डेटा जनरेटेड, क्रिएटेड? कहाँ पे जनरेट हो रहा है? सर्वर में या डेटा सेंटर में? बताइए. वेयर इज डेटा बीइंग जनरेटेड? जी, सर्वर और डेटा सेंटर. डेटा सेंटर. Who is creating that data? Users. User किस पे डेटा बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं? Their machines, either notebook, desktop, or a workstation. So do you agree कि ये एक गेट है? If you want to protect your organization from attacks of ransomware, cyber crime, all these type of data breaches, so you have to protect your endpoint first. Are growing day by day because the work has changed. पहले होता था 9 to 5 टाइम या 9 to 5 ऑफिस में बैठे करते थे कि यार USA में, कनाडा में, से डेवलप्ड इकोनॉमीज में कहाँ से स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. So we have different types of attacks. Ransomware, cyber crime, data breach. कुछ चीज़ें हैं वो बिलो द OS हैं, कुछ चीज़ें विच आर ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड फर्मवेयर, कुछ चीज़ें वो अबव द OS है, राइट? सो इफ योर हार्डवेयर इज नॉट प्रोटेक्टेड एट द एंड पॉइंट लेवल, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है. और हाउ आर यू एबल टू सिक्योर योर एंड पॉइंट?
if you have the technologies built in, I'm talking about built in, not built on or built with. First point is built in technologies, which is built in as a hardware feature, right? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक आ जाते हैं कि वो महंगा सस्ता, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अब हमें अमूमन ये होता है कि यार हम कोई फीचर देंगे बहुत महंगा हो जाएगा, हम उसको डिस्कस नहीं करते, हालांकि मे बी 5, 10, 20, 25 डॉलर का फर्क पड़ता है। तो वी हैव टू टेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। IT role, you guys are doing a great job. Please don't think that आपका role is not important. Your role is very, very important. Your guys' IT role is critical to any organization's success. Don't take it for granted. जिस हम कहते हैं ना यार notebook, तो आप you guys are doing a great job. एक शेर याद आ गया, मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर है, मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम तमाम लोग अपने अपने इज ऑलवेज लिमिटेड, इसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? मैंने आज एक मशीन लेनी है, $100 के डिफरेंस से मैंने तो जी $550 मेरा बजट है, मैंने इससे बाहर नहीं जाना। हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक $50 बचाते बचाते over a period of 3 years we end up spending maybe $2,500 on that same machine maintenance. That is called the total cost of ownership. That starts from the day you spend and acquire that technology or machine. The total cost of ownership needs to be calculated. एक मशीन आपने आज $50 महंगी ले ली, $100 महंगी ले ली, और मैं भी आपको maybe $500 over a period of 3 years. Makes sense. आपने $50 बचा लिए और $2,500 लगा दिए उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, उसकी सपोर्ट के ऊपर, आ रही है जा रही है, IT डिपार्टमेंट के पास आई, वापस एंड यूजर के पास, एंड वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द डाउन टाइम कॉस्ट, जो एम्प्लॉय फायरिंग बैठा है जिसकी वजह से आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हैज बीन डिलेड, आपका प्रोजेक्ट यू मिस द डेडलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, research shows that dealing with a single vendor that is offering multiple IT services really helps you lower cost and drive results, and you can see all these figures. ठीक है? So multiple IT services really helps your organization save cost. So in having, I will discuss that as well. End user experience is very important. आपने देखा होगा एंड यूजर कहते हैं यार मुझे बड़ी लाइट सी मशीन चाहिए, सिल्वर कलर की हो, थिन, अच्छा उसका डिस्प्ले हो, फुल HD, ये वो। अब IT डिपार्टमेंट अपने लिए आपसे सोचता है कि भाई मैंने उसको ऐसी मशीन देनी जो कि सिक्योर हो, जो कि विद स्टैंड कर सके 9 to no टाइम, अगर कोई बंदा 24 आवर भी चला रहा है तो यू शुड हैव दैट रोबस्ट एंड रगेड मशीन। IT डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने वी हैव टू हैव ए बैलेंस बिटवीन द एंड यूजर चॉइस, नीड एंड वांट। वी हैव टू डिफरेंशिएट। नीड क्या है, वांट क्या है? देयर इज नो लिमिट। वांट की कोई लिमिट नहीं है, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय ए डिसाइड। एक पावर यूजर को यू हैव टू प्रोवाइड विद ए हायर एंड स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर प्रोसेसर, हायर ग्राफिक कार्ड, हायर रेजोल्यूशन मॉनिटर, हायर रैम। एक डेटा जो एंट्री कर रहे हैं उसको मे बी आप 4i3, 4GB, 8GB किस्म का जेनेरिक किस्म का मशीन दे सकते हैं। अच्छा, any question you can stop me and ask, because I hate to call it a presentation. It's a conversation. It's a discussion. कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, मार्केटिंग ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, total cost of ownership, return on investment. It may sound we are talking about some marketing subject. No, it is related to this presentation. हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि 80% ऑफ द टाइम IT डिपार्टमेंट इज डूइंग द मेंटेनेंस टास्क, फायर फाइटिंग, ये हो गया वो हो गया। तो विल डिस्कस किया किस तरह से वी वांट IT डिपार्टमेंट टू बी इन कंट्रोल, टू मैनेज एंड डिप्लॉय
to be able to control a machine, to fix the problem. If you have offices across Pakistan, Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar, Quetta, so if something goes wrong in Karachi, you are able to fix it. What if something goes wrong with an end user sitting in Islamabad or Peshawar or Quetta or Lahore? Do you have the capability to remotely manage that machine? Without that end user having to return the machine to the IT desk, do you have capability to switch it on, switch it off? Even if the OS has crashed, do you have the capability to install the OS remotely? Do you think it is possible? Possible है अगर OS क्रैश हो जाए? नहीं possible ना? हाँ जी और is it possible? Is it possible to switch on a machine remotely? Possible है. ठीक है. It is possible to change the BIOS settings remotely. BIOS. Yes. All these things are possible provided you have selected the right technology in your machine. If your machine is having those features built in, these features cannot be added later on. You have to make this decision at the point of purchase, when you are really purchasing. When you are designing your upcoming RFP, I won't say give us any benefit of the doubt or any favor. I'm not asking for any favor. I'm talking about technology that you should think you are going to include in your upcoming RFP. उसका क्या नतीजा है? Apple to Apple comparison. At the end of the day, I am not talking about any thing which is only specific to Dell. ठीक है? कुछ चीजें हैं हमारे advantages हैं. But if you're thinking along these lines, कि मैंने ये features अपनी upcoming RFP में add करने हैं, include करने हैं, then you're going to have a peace of mind. Then you're going to achieve the economies of scale. Then you're going to maximize the return on investment. Then you're going to minimize the total cost of ownership. This is the whole objective. Select the right device. Give the right device to the right user. It doesn't mean कि आपने like low level की machine देनी है. A power user needs a powerful machine. A designer needs a different type of a machine with a different graphic card. A person who is working on artificial intelligence, machine learning or something else needs a different type of graphic card. So, IT role. Focus on the big picture. Right? Instead of these, day-to-day routine tasks. Okay, 5 minutes. So these are different personas. The whole idea is that you have to analyze your workforce. We all have different types of people in every organization. So when it comes to your purchasing decision, think about what type of a person needs what type of a machine. So these are some personas. Some people are on the go all the time. Some people are sitting in the desk from 9 to 5. Some people are having a mix of this. Some people are always remotely working. Some people are power users. There are some engineers, maybe some data analysts. They're working with large set of data. So all people need a different type of a machine. So that's how you can optimize and leverage this portfolio. That's how you can leverage this portfolio. And leveraging this portfolio is not the whole idea. The whole idea is to be able to be in the driving seat to optimize your limited budget. So this is the portfolio that I shared with you. So I think I spoke about that you need to have devices which reduce the cost and help the IT department to manage the machines, right? So basically there are 5 features. Express response that optimizes application performance. Then we have intelligent audio. These Zoom and Microsoft meetings are the name of the game in today's world. So if you are not able to hear the participants of your meeting, it's no good. So we have the noise cancellation feature. It eliminates the non-human voice and noise.
traffic noise, if a dog is barking, so it intelligently removes that noise. So the result is, superb meeting experience. Express Connect, it automatically connects with the strongest Wi-Fi signals available in that environment. Then we have express charge, we are on the go, you have limited time available. So in like 40 minutes, you are able to charge 80%. And if you have even less time, so it can charge up to 35%, 40% in 20 minutes. So these are wonderful features. Time thoda apna time bahut kam diya. Security threats are growing. Ransomware, cybercrime is growing day by day. So you have to have machines which are able to not only prevent and detect but respond before the threat happens. ये बहुत important है. Before the threat happens, so your machine should be capable. The firmware and hardware level protection is very important. That is going to protect the complete compute stack before it happens. Before something tampers the BIOS. If your BIOS is gone and you are not aware, so you have to ask some questions, please, right? Intel vPro is the name of the game for a large enterprise with approximately 1,000 plus employees. But we have seen a trend, even the organizations with like 500 plus employees, they are making use of this Intel vPro features, which are very, very important. Basically, Intel vPro is helping you to be able to manage your fleet remotely. You can do all these things remotely. And IT department के बंदे को भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस में हो. He can also, on the go, or maybe he's sitting, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस में हो. He can also, on the go, or maybe he's sitting the home. From his home, he based agent called AMT, Intel AMT. So they are able to take control. So these are the features: power on, power off. OS को आपने reinstall करना है, अगर crash हो गया, you can make use of all these features with the help of Intel vPro. So this is our Latitude portfolio. We have every type of machine for every type of a user and application. I'm not going to go into details of specifications. मैंने पहले कहा था specification की बात नहीं करेंगे हम. Then we have a whole range of client preference to maximize the productivity of your employees. This is the docking portfolio. This is the Precision workstation. We are number 1 globally in workstations. So this is the mobile workstation portfolio. You can see up to 16 GB graphic card can be supported, up to 16 GB. Storage can be supported, up to 128 GB RAM is supported. So I'll just cut short. This is Optiplex portfolio, Latitude Rugged. These are the machines, military grade machines to survive the harshest environments. If you're working on a desert, high altitude, freezing temperature in rainforest, so Dell Latitude Rugged for mission critical tasks, for police, for army, for navy, these type of machines are recommended. And Dell is the only global brand, tier one global brand to have this portfolio, Dell Rugged. So E series, P series. So we have a lot of choice for you to pick and choose. And the whole idea is to boost the productivity. So this is only last 2 things, Ji. First thing is, all vendors will be supplying their desktops with an SSD being a primary storage. आपको देगा. So आपको take an action और SSD के साथ लें. और last but not the least, Windows 11 की मैं एक बात कर दूं कि Windows 11 डाउनग्रेड की प्राइस is from $100. So this is about time that you should shift from Windows 10 to Windows 11. So इसमें इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है, तो you can save cost. और
देन उसको स्टोरेज का मसला तकरीबन 5 से लेके 8 Thank you, Mr. Khalaf Raja, for your invaluable contribution in discussing Dell Technologies EUC portfolio at our event. Your expertise and insights have greatly enriched the knowledge and understanding of all. A huge round of applause for Mr. Khalat Khwaja. Now, it gives me immense pleasure to request Mr. Naveed Siraj, Country Manager, Dell Technologies, to come onto the stage and say a few words. A huge round of applause for Mr. Naveed Siraj. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the kind introduction. Noman Saab, I'm extremely grateful कि आपने मुझे दावत दी आने की. It's my pleasure to be here. मेरा जो एक partnership रही है ज़ीशान के साथ, ज़ीशान भाई, thank you very much for having me, and especially Atif Saab, thank you very much. You were so kind to send me messages, and I could not have missed this opportunity. उसका रीज़न ये है कि हमारी एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिव हिस्ट्री रही है SI ग्लोबल के साथ, which spans at least 6-7 years, और वक्त के साथ साथ ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है. मेरे कॉलीग और भाई और साथी हालात ने ज़िक्र किया कोविड के दिनों में. आपको अगर याद हो तो जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई थी वो पब्लिक हॉलिडे थी मार्च 23 की. तो पीपल वर नॉट रियली रेडी फॉर कंप्लीट एंड टोटल क्लोजर ऑफ बिजनेस. हमें एक कॉल आई एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की छुट्टी के दिन मार्च 23 के कल हमारा ट्रेडिंग डे जब अभी एंड यूज़र्स की सिक्योरिटी के बारे में भी खलात ने भी बात की, एंड वही हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन था कि देयर वर सो मेनी साइमल्टेनियस यूज़र्स accessing the data center at the same time that the system was crashing. उस ज़माने में कोई भी रेडी नहीं था अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, और आपको बाहर निकलने के लिए भी एक NOC चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन में ममानियत थी आपकी फ्री मूवमेंट की. मैं जिस बात की तरफ निशानदेही करना चाह रहा हूँ ये कि मैन्युफैक्चरर के पाकिस्तान में होने का फ़ायदा ये था कि उस NOC को हमने इंटरनली 1-1.5 घंटे में कुछ बहुत क्रिटिकल स्पेयर्स और अपग्रेड्स थे वो हमने वहाँ से निकाले. आई थिंक रात का कोई अजीब व गरीब टाइम था, 2-3 बजे सुबह को, एंड दे कोऑपरेटेड. सो व्हाट आई रियली वांट टू से इज़ दिस इज़ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि हमारे पार्टनर्स ने अपने रिसोर्सेज को किस तरह लेवरेज किया. और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने पाकिस्तान में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जिस तरह डेल ने की है कि रात को कोई भी वक्त हो हम अपने टीम मेंबर्स को रीच आउट करके अपने रिसोर्सेज को पूल करके. हमारा अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव और हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं अपने चैनल के साथ, वो दे आर सिंगुलरली फोकस्ड ऑन सर्विंग यू आर वैल्यूड एंड कस्टमर्स, एंड सर्विंग आर कस्टमर्स इज़ एक्चुअली द वन पैशन दैट वी शेयर. इसीलिए मुझे बहुत खुशी लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे पार्टनर्स को भी इनकरेज किया, मोटिवेट किया बाय कमिंग हियर. मेरे कॉलीग खलाद ने जब एक अपने क्लाइंट पोर्टफोलियो की स्लाइड
चलाई तो उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आई होंगी. दैट इज़ ओनली 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ चॉइस, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो इतना ब्रॉड और इतना वास्ट है कि उसमें ऐसा है ग्लोबल जैसे वैल्यूड पार्टनर्स की बहुत ज़रूरत है और अवान डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बहुत ही क्रेडिबल पार्टनर्स की ज़रूरत है. लेकिन आई वुड टू रियली लर्न मोर एंड मोर अबाउट जो हम सिक्योरिटी पे जो फोकस था, साइबर रेजिलियंस पे जो हमारा फोकस, हम मेरे कॉलीग पहले कह कर गए हैं. किसी भी सुबह आपको ये पता चले कि आपका एक या दो बैंक्स पिछले 2-2.5 साल में एटलीस्ट देयर हैव बीन 3 मेजर रैंसमवेयर अटैक्स ऑन 2 बैंक्स, 1 यूटिलिटी कंपनी, और जहाँ यूटिलिटी कंपनी का डेटा भी लीक हुआ होगा. सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पोर्टफोलियो कि साइबर रेजिलियंस में आप ज़रूर, जब हमारे दूसरे प्रेजेंटर्स दी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दैट पोर्टफोलियो टू योर डिस्पोजल, let us know to transform your organization as well as how our portfolio fits into that. It's एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि and this is going to be my last point. पिछले 10 दिन में हमने बहुत सुना है कि IMF के पैकेज के बाद हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे. बट इफ़ आई टेक यू अ ईयर बैक, 1 साल पहले हम बिज़नेस आगे कैसे चलेगा, आई एम श्योर हमारे एंड कस्टमर्स को जो सर्विसेज थी वो भी इम्पैक्ट की हैं. लेकिन आई कि एज अ कॉम, बट हमारा सिंगुलर फोकस हमारे एंड कस्टमर्स को सर्व करने में लगा हुआ है. इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम चाहे मैन्युफैक्चरर की पोजीशन में हो की लेवल पे हों, हमें रिजिलियंट रहना है. वी हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व एज अ नेशनल ड्यूटी, बिकॉज इफ़ यू आर रेजिलियंट, तो जिस तरह सॉल्यूशंस हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग, लेट्स प्रॉमिस हमारे कंपेटिटर्स ऑफर करते हो, आर कंट्री वेरी वेरी रेजिलियंट. और यही वो रेजिलियंस है जो हमें बुरे वक्तों में काम आएगा. हमारे बैंकिंग कस्टमर्स की जब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी से स्पर होगी को सर्व करेंगे. जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे तो वो जो वर्कफोर्स डेवलप होगी, कंपैरेटिव एडवांटेज देगी. तो आई अगेन thank SI Global team, Avan team, for inviting us, giving us the honor and the privilege. And I hope कि इस event में आप ज़रूर टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें और हमें अपॉर्चुनिटी दें कि हम आपको थोड़ा और ज़्यादा बेहतर. I think there's a question and a very impatient one. अस्सलाम वालेकुम सराज साहब, क्या हाल है आपके? सर, like technology partner along with all the SI's vendors. So सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ अर्सा या कुछ दिन पहले जो है वो हुआवे ने अपना एक क्लाउड लॉन्च किया है. क्या ऐसी कोई चीज़ मैं फ्यूचर में देख सकता हूँ कि डेल कोई ऑफ़र कर सकता है? क्योंकि सर हम अपने रोड मैप के अंदर, क्योंकि सर हम MFB से चालू करते हैं, सर हमारा कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है. तो क्या ऐसा कोई क्लाउड का कोई चीज़ आने वाली है या आपके माइंड में है या रोड मैप में है जो नेक्स्ट ईयर के एंड हमें मिल सकती है? मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा सजा के. Short answer, yes, a very resilient cloud platform is available with Dell. लेकिन जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि IT इज़ नो लॉन्गर ए सपोर्टिंग फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. मेरी अपनी नज़र में और हमारा अपना भी ये बिलीफ है कि IT हैज़ बिकम द बिज़नेस. अब उसमें क्लाउड आपको कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने में सक्सेस देता है वो आपको एक इंटरनली सोचना पड़ेगा.
लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग मी कि वो क्या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स डेल के पास अवेलेबल हैं, वो डेफिनेटली अवेलेबल हैं, बट दोज सॉल्यूशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। उसका रीज़न ये है कि कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में मोनेटाइजेशन के जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेंट्रल बैंक जो है वो रिपैट्रिएशन अलाउ करता है नहीं करता, तो कंपेटिटर्स वेल कि उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म ग्रो करे, अगर दैट इज़ समथिंग दैट द कस्टमर्स फाइंड यूज़फुल। लेकिन आपको क्लाउड को पूरे फुल सर्कल में देखना पड़ेगा कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होते हैं उस क्लाउड प्लेटफॉर्म से, और क्या फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अवेलेबल है। जहाँ तक सेंट्रल बैंक के कुछ रेगुलेशंस का मुझे इल्म है कि वी हैव नॉट डन द फुल सर्कल येट, लेकिन बहुत हम करीब हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि जिन ममालिक में फाइनेंशियल और इस मॉडल की रिपैट्रिएशन के मॉडल्स अवेलेबल हैं, वहाँ हमारे पास पूरा पोर्टफोलियो है। लेकिन जहाँ जहाँ जिन ममालिक में कंप्लायंस और रेगुलेटरी लकूनाज हैं, वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पार्टनर्स वहाँ स्टेप इन करके वही सॉल्यूशंस आपको मोनेटाइजेशन और रिपैट्रिएशन में ऑफ़र कर सकते हैं या नहीं है। मैन्युफैक्चरर के एंड पे कोई ऐसा कबाहत नहीं है, तो कबाहत है वो रेगुलेटरी एंड पे है। आई थिंक देयर इज़ अ फॉलो अप क्वेश्चन। सॉरी सिराज साहब, आपसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। सर मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि सर क्योंकि हुआवे ने खजाना के साथ मिलके काम करना शुरू किया है एंड दे आर बिल्डिंग लाइक अ ह्यूज डेटा सेंटर, 500 रैक्स के साथ वो डेटा सेंटर बना रहे हैं एंड दे आर कंप्लाइंग विद SPP। हेलो। तो मेरा क्वेश्चन वापसी यही है कि सर वो जो कंप्लाइंट हो रही हैं, जो से बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आपने देखा होगा कि SPP ने फ्रेमवर्क भी इशू कर दिए हैं एंड दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड अस दैट व्हाट data should reside in their like in Pakistan data centers along with the offshore data centers के अंदर भी उसने पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इन डेप्थ मल्टीपल SPP की ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर वो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ FSI, डिजिटल बैंक्स, एवरीवन सबको वो जो है वो बता रही हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ जा सकता है। तो बीइंग MFB कस्टमर या MFE, तो हमें तो सिर्फ इतना अलाउ किया गया है कि आप अपने फाइनेंशियल डेटा को इन कंट्री डेटा अंदर आप मूव कर सकते हैं, इवन इट्स अ फाइनेंशियल ऑल्सो, बट इट रिक्वायर्स लाइक SPP अप्रूवल। तो सर मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि सर क्या डेल ये सोच रहा है कि इस तरह की कोई, सर मैं तो बाहर तो कहीं रहता नहीं हूँ, मैं तो यहीं की आपसे बात करूँगा, मुझे यहीं बैंक में काम करना है, यहीं की मैं बात करूँगा आपसे। तो मुझे सिर्फ आपसे यही पूछना था कि सर इज़ देयर एनी रोड मैप फॉर अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन अ लिटिल मोर डिटेल with regards to your own organizational requirement, क्योंकि हमारा जो did you have a point? तो we can have an offline discussion, अभी हम यहाँ मौजूद हैं। ओके सर। Any other questions? Thank you very much जी, enjoy the rest of the session. Allah Hafiz. Thank you, sir, for gracing us with your presence. It was a delightful insight that you've given us. Thank you very much for your presence. I would like to call Mr. Numan Ahmed Saeed, our CEO of SI Global Solutions, to come up on the stage and present you with a token of appreciation. Thank you for giving us your presence. Sir, it's an honor that you have graced the occasion. And my friends, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि किसी इवेंट में आए हैं, तो उनके लिए ज़रा खास तालियों की आवाज़ बहुत कम है।
Thank you, sir. Thank you very, very much. Thank you. Okay, I would like to call on the stage Mr. Riaz Ahmed from Mizan Bank. Mr. Riaz, please. Thank you, Mr. Riaz. Thank you, Mr. Okay. Our next distinguished speaker is a multi-skilled IT professional with in-depth knowledge of digital transformation, enterprise solutions, sales and marketing. Having more than 13 years of experience in the field of digital world, please join me in welcoming Mr. Ayaz Ilyas to come on the stage and share his thoughts. A huge round of applause for Mr. Ayaz Ilyas. Thank you, SI Global team, and thanks everyone for joining us today. Like Navi Saab mentioned before that cyber resilience and cyber security is quite a hot topic now because of ransomware attacks. But obviously in the interest of time, I'll be covering more into storage side and mainly mid-range storage and entry-level storage. So when it comes to Dell storage portfolio, we have enterprise storage like PowerMax, and then we have mid-range storages like PowerStore, Unity, and then we have entry-level storage, which is ME5. So today I'm going to cover PowerStore, Unity, and ME5. So we all know that data is a new currency now, and data is the most important thing. Data management is quite a challenge for IT operation. So you need a solution which covers all these things when it comes to data. So when it comes to data, you require data protection, data efficiency, data diversity, data value, plus an automation, intelligence, simplicity, and agility. So with to cover all these things, we require new architecture. And in order to cover this, we have a new PowerStore, which was launched in 2020 by Dell. PowerStore is data-centric intelligence and adaptable storage, and it can obviously cover all your multiple
workload of your infrastructure, like your FC, iSCSI, NVMe. It's a hybrid storage, which is block level and file level storage, and it can cover your different workloads. The good point of power storage, it is NVMe storage, and it's a powerful and quite effective storage when it comes to handling your data. Like we all know, flash, since power storage, flash storage depend on the data reduction to reduce the cost of the storage. Power Store has inline always on data reduction and compression technology, which gives you 4:1 data reduction guarantee. So Dell is going to give you the future-proof guarantee for data reduction. For instance, if you have a data, if you require, let's say, 4 TB of your data, and you can always buy 1 TB, and it will give you 4 TB on the through data reduction technique. And it goes up to, some instances it goes up to 10:1, but depending on your data load and your data. So for instance, if someone has videos and images, obviously the data reduction and compression technology won't cover that. So when it comes to Power Store, there are two deployments models and two deployment modes. First is standard deployment, which is a model called Power Store T. Other one is Power Store X model, which contain hypervisor within the storage. So it's first kind of storage which comes with a hypervisor. So when it comes to Power Store Model T, so it includes Power Store OS, which is pre-installed, and it supports block, file, vvolve, and different storage protocols. When it comes to X model, it includes Power Store OS and pre-stored VMware EXSI, and it also supports different protocols and different applications. So it's an app-on technology, and VMware EXSI, like I said, is pre-installed on this. And the use case of this, it is going to cover your heavy workload, like your application like Oracle, SAP, your SQL servers. So you can run those applications as a virtual machine on the Power Store itself. There are a few models, so I'm going to skip those. Right now we have a generation 2 of Power Store, which is all these models are here, and obviously you can speak to SI Global team, and I am here to basically understand that which is suitable for you guys. Next in the line is Unity XT storage. It's another storage which supports different kind of workloads. Again, hybrid storage, and it contains different hard drives. Like unlike a Power Store, which had like only NVMe support, this storage support your all kind of hard drives and workloads. So the good thing about XT is Unity. You can use this for your file servers, for your surveillance and your videos and all other stuff. There are different models when it comes to Unity, and it support your safety and security, your databases, your files, your VMware workloads, and your different workloads. Last in the line is PowerVault ME5 storage, which is entry-level storage, which covers most of your workload. It's simple, fast, affordable, and reliable as well. So we have three basically different models when it comes to ME5, 5012, 5024, and 5084.
Thank you everyone. If you have any question, you can obviously contact us. Thank you. Thank you, Mr. Ayaz Elias. We are immensely grateful for the time and effort you have invested in preparing and delivering such an enlightening session. Your expertise and experience have undoubtedly enriched our event, and we believe that the knowledge gained from your presentation will have a lasting impact on all our attendees. Thank you very, very much, sir, for your presentation. A huge round of applause. Now, we are delighted to announce our next distinguished speaker, who will be joining us on the stage to share insights and expertise on SI Global Solutions. With his deep understanding of asymmetric ICT solutions and his extensive sales expertise, he is well positioned to shed light on our unique benefits and transformative potential of these solutions. Please join me in warmly welcome Mr. Atif Khan, our Head of Sales at SI Global Solutions. A huge round of applause for Mr. Atif, Head of Sales. Presentation. Before Mr. Atif starts his session, there is a special announcement to be made. Some exciting giveaways coming your way. We would be asking a few questions at the end of this presentation, and those who would answer it correctly will get a gift hamper. So we would request all our esteemed guests to stay attentive. Over to you, Mr. Atif. Thank you, Anas. Thank you, Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. First of all, I would like to thank you all to joining us tonight. और मैं ज़्यादा खलल नहीं डालूँगा क्योंकि obviously थोड़ा सा behind schedule चल रहे हैं. Anyway, in short, I'm very thrilled to have you here, and I'm very passionate about the technologies and the endless possibilities, right? So I'm going to show you our company presentation. So you can have a quick view about our company and our product offerings, right? So ये जो key slide है, who we are, as earlier Luman Saab said, we are a system integrator company, right? Basically, our company formed back in 2016, and last month we have celebrated our 8th anniversary, right? And these are the figures. I would urge all to memorize this slide, because end of my, as Anas said, there will be some giveaways on this slide and the other slides. So in short, our annual turnover is 900 million. We have very much capable team, and the cumulative experience of that team is 350 years. How we get to that figure? हमने ये किया है कि जितने हमारे लोग हैं उन सब का जो experience है, we have totaled it and come to that figure, right? And we've got around 125 plus employees worldwide. जिसमें Pakistan, we have got a few employees in Canada and US. And
Alhamdulillah, we have successfully delivered and closed 700 plus projects, not only in Pakistan, but across the globe. Around 30 countries we have, done projects. And as मैं यहाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर मौजूद हैं, तो अगर मैं इस फिगर को देखूँ 500 प्लस हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आई गेस 130 पीपल सिटिंग हेयर टुनाइट, और रेस्ट ऑफ दी जो हमारे कस्टमर्स हैं इस जो कि पाकिस्तान एंड अब्रॉड हैं. What we do, basically we provide end-to-end solution from scratch, launch and beyond, right? And these are the products, or you could say the verticals. We have the capabilities and we have the solutions for all your IT needs, right? To name a few, we've got a solution in cybersecurity, we've got solution in BMS, and we've got solution, in system integration and hardware, networks, software, all sort of, verticals and products we are covering. And here's our strategic team. You can see my face and all of the, हमारे जितने भी employees हैं यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं. And honestly speaking, since past 3 years, we are investing heavily on our HR. उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास राइट रिसोर्स होगी और टेक्निकल रिसोर्स होगी, सो यू कुड आप कस्टमर को सही हैंडल कर सकते हैं एंड यू कम अप विद द राइट सोल्यूशन, राइट? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसमें हमारे पास जो हमने रिसेंटली और इन द पास्ट 3 or 4 years, और आई कुड से लास्ट 1 year जो हमने प्रोजेक्ट्स क्लोज किए हैं, उनकी डिटेल्स है. इसमें I'm going to touch only few because time is very short. Number 1 is SAPT. यहाँ SAPT की टीम भी मौजूद है. Basically, we have done a project of CCTV solution for their RTG cranes. If you're not familiar with the RTG cranes in simple words, अगर आप पोर्ट पे जाते हैं और आपने देखा होगा जो कंटेनर्स होते हैं उसको एक क्रेन होती है, वो पिक करती है और पिक करके उसको दूसरी जगह पॉइंट पे रखती है. तो पॉइंट ए से बी जो ये जो मूवमेंट होती थी, जो आरटीजी क्रेन्स पहले थी, उनमें होता ये था कि जो ऑपरेटर है ही सिट्स अराउंड लाइक, उसकी जो हाइट है वो 4th फ्लोर पे अगर कोई शख्स बैठा हो और वहाँ से ऑपरेट कर रहा हो, तो वहाँ से नीचे देखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 3D व्यू नहीं आता. यू कैन सी इन फ्रंट, राइट, लेफ्ट, बट यू कांट सी दी रेयर पे कुछ उसको नज़र नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. सो वी कम अप विद द सोल्यूशन और अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सेसफुली डिलीवर्ड इट. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसमें टेक्नोलॉजी डेल है. डेल की हमने प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं क्योंकि जो ट्रेन में ऑपरेटर है, वेयर ही सीज ऑल दी दी व्यू ऑफ द कैमराज, it's basically on a Dell professional LCD जो कि वहाँ मौजूद है, right? and इसमें जो दूसरी हमने कैमरास की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इट्स हिकविजन के साथ हमने काम किया है एंड नेटवर्क्स, इसमें नेटवर्क्स भी इन्वॉल्व है. वन मोर थिंग जो इसमें मैं बताऊँगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वी आर जस्ट हार्डवेयर कंपनी और जो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेच रहे होते हैं इस तरह. ऐसा नहीं है, हमारे पास होलिस्टिक सॉल्यूशंस हैं जिसमें आई गेस आप सब ने ये रेलवे की ऐप यूज़ की होगी. बेसिकली वी आर द वंस हु डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड टू पाकिस्तान रेलवेज, और इस ऐप के थ्रू यू कैन बुक योर टिकट विद इन 3 minutes, लेस देन 3 minutes टाइम, राइट? सिमिलरली जुबली इंश्योरेंस के अंदर हमने LMS सोल्यूशन डिप्लॉय किया है. इस LMS सोल्यूशन में लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है, इस वक्त न्यू जुबली की जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स होती है, जो उनकी सर्टिफिकेशंस होती है, इस थ्रू आवर सिस्टम. एंड ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यू कुड सी सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोगोज, जिसमें ऑन टॉप जो है प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब असेंबली. इट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट. वी हैव डन दैट प्रोजेक्ट. इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी $500 million, जिसमें हमने इनको BMS सोल्यूशन दिया था. वी हैव प्रोवाइडेड देम द डेटा सेंटर, we provided them a voice solution, we provided them a media cell, media हमने channel भी इनको एक बना के दिया, and all is running successfully.
और सिंध पुलिस, यहाँ सिंध पुलिस के हमारे इट्स वन ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक अकाउंट, रीज़न बीइंग कि वी आर सेफ सिटी कंसल्टेंट फॉर सिंध पुलिस। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल जो है ये रोल आउट हो जाएगा। प्रोजेक्ट काफ़ी इस पे बहस मोबाइल हो चुका है, यू कैन यू हैव रेड इन दी न्यूज़पेपर एज वेल। और इसी तरह हमने भी रिसेंटली सिंध पुलिस में AIO का सोल्यूशन जो है डिप्लॉय करने हम लगे हैं, इस मंथ में इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे अक्रॉस सिंध। ओके, these are the few customers. If you could see, in every vertical we have footprint, right? Starting from defense, ठीक है, on the bottom, logistics, or in between education, education sector, banking and finance, सारे के सारे covered, and we have very good footprint. We have delivered tailored solution. It's in data center, in software, and networks, and others. All right, these are the industry certification. Obviously, जब आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल काम करते हैं जहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए होती है, तो नीड सम सर्टिफिकेशंस एज वेल। तो ये हमारी टीम की सर्टिफिकेशन है, ये ओनली शोइंग फ्यू ऑफ देम। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हम जो फॉलो कर रहे होते हैं जब आपके साथ, जब भी हम कोई भी सोल्यूशन पे बात कर रहे होते हैं। ओके, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि आप सब IT से रिलेटेड हैं और एवरी डे यू आर सीइंग पीपल कमिंग टू यू कि जी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास ये है। ऑब्वियसली जब आप कुछ सोल्यूशन सेल कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन जो टीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी टीम इज़ केपेबल and got the right knowledge and expertise, so you come up with the right solution, right? So as I said earlier, we have partnered with some of the best talent of the industry, right? Or these are the verticals, all verticals leading by our top guys who are capable, not only capable but very vast, they've got very vast experience in their own field. To name a few, we have got specialized people in data centers, cyber security, network, consultancy, digital. We have our own digital marketing company. And apart from IT, we have got another division called maritime. We provide maritime solutions. Recently, we have provided a solution to what they call Port Qasim. Yes, Port Qasim पे हमने जो है उनको बॉयज़, अगर आपने देखा होगा जब शिप्स आते हैं किसी भी चैनल में तो वो नेविगेट करते हैं, तो नेविगेशन के लिए जो है बॉयज़ यूज़ होते हैं। तो दोज बॉयज़ बेसिकली वी हैव डिलीवर्ड टू पोर्ट कासिम, और जो हमारा सी शोर है जहाँ से जब एंटर होते हैं वहाँ मौजूद हैं। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क ऑल माई वर्टिकल हेड्स कि इफ़ यू कुड कम ऑन द स्टेज सो पीपल कैन सी हम AI बेस नहीं हैं, हम ओरिजिनल, हमारे पास लोग असल में हैं। तो आई वुड आस्क जीशान, कमांडर साहब एंड रेस्ट ऑफ द टीम टू कम ऑन द स्टेज प्लीज, ऑल द वर्टिकल हेड्स। कमांडर साहब, जहीर भाई प्लीज। जहीर साहब, मैडम आयशा, नुमान साहब, if you could join as well. सर इसके अलावा हेलो, अच्छा जी, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस एंड पाकिस्तान ऑल्सो that we are the only company who is rated number 3 on digital marketing, only Pakistani company in the world. It's a proud moment for us and for Pakistan. थैंक यू। सो इसमें अगर आप देखें तो सारे वर्टिकल हेड्स मौजूद हैं एक्सेप्ट वन। वी हैव रिसेंटली हायर्ड वेरी केपेबल एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बेस्ड आउट इन US, और मैं चाहूँगा कि आफ्टर दिस स्लाइड आप लोग वो उनका शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है फ्रॉम US वो हम प्ले करें टीम, ताकि आप लोग सब उनकी बात सुन सकें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी
solution we are offering and services. Thank you. इसके बाद अभी है भाई टीम डेल क्यों पीछे रहेगी? आए प्लीज आइए. एंड ऑनेस्टली जैसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन टीम बहुत ज़रूरी होती है. फ्रंट पे तो हम नज़र आ रहे थे लेकिन बिहाइंड अस द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इज डेल. सो आई वेरी थैंक यू फॉर खलात ख्वाजा एंड सजाद भाई. ये ऑल द वे लाहौर से हमारे ट्रैवल करके आए हैं फॉर दिस इवेंट. और इस इवेंट में इन्होंने आके अपनी स्पीचेस एंड सोल्यूशन ऑफरिंग बताई हमें. एंड स्पेशली थैंक्स टू एयाज एवान डिस्ट्रीब्यूशन से कि उन्होंने वेरी शॉर्ट नोटिस ही जॉइंड अस हमें फॉर दिस इवेंट. थैंक यू वेरी मच. लास्टली अगर आप प्लीज़ प्ले कर दें. ठीक अभी एक प्ले एक रह गई है. एक वर्टिकल हेड की बात रह गई. प्लीज़. Hello folks, good evening and welcome to the event hosted by SI Global. My name is Amir Khan, I'm a cybersecurity consultant. For the next few minutes or so, we will be talking about cybersecurity. There was a time before time when our information and IP assets were critical. Hello folks, good evening and welcome to the event hosted by SI Global. My name is Amir Khan, I'm a cybersecurity consultant. For the next, we will be talking about cybersecurity. Hello folks, good evening and welcome to the event hosted by SI Global. My name is Amir Khan, I'm a cybersecurity consultant. For the next few minutes or so, we will be talking about cybersecurity. There was a time before time when our information and IP assets, though critical, were not that easily exploitable. But thanks to internet, our information and IP assets have been weaponized. Yes, weaponized. Our PII, personally identifiable information, our PHI, or personal health information, and our organization's IP assets. There could be software, hardware documents, there could be system design, there could be flow plans, it could be customer list, financial plans, marketing plans. They're all being hacked by extremely sophisticated nation actors and international criminal gangs. And to top it off, script kiddies. They're all after one and one thing only: gain unauthorized access to our IP assets and then use it for adversarial gains, which could be political, social, financial, even terrorism. The threats are real, folks. The threat is real for your company, for your organization. When I look around the hall, I see a broad spectrum of companies and government organizations. You all have different mission statements, different customer base, different workflows, different kind of employees. But for a cybersecurity bad actor, you are all the same. Potential target. A bad actor might hack into a pharma manufacturing company and impact the production of life-saving drugs. It has happened. They can take control of water treatment plant, creating health issues for the city. It has happened. They can impact financial transactions, slow down government to implement social policies, creating havoc. We can help you achieve a strong cybersecurity posture by helping you create a cyber risk and resiliency program. We can guide your organization to help cybersecurity holistically with risk-based approach, because each organization is different. We don't believe in one cookie-cutter solution. Do not try to deal with cybersecurity by just buying an off-the-shelf tool and hoping it will solve the problem. It will never solve the problem. Know what risks you are facing and what issues you need to deal with. So let us help you achieve a hardened security posture. Thank you very much. Have a good evening. Bye-bye. Slide. The slide.
Thank you very much. I hope you have listened this, here's our... A huge round of applause for Mr. Atif. Now we will be randomly going to anyone and I'm going to ask a question. Please raise your hand. Sir, your good name? Assalamu alaikum. First vertical is your server side, second is compute, then storage, and other is like laptop and desktops. Okay, so shall we? Yes, sir. Okay, one of them is Asim Noman. Sir, basically the question is how many verticals does SI Global Solution have? So we have got a lot of verticals. Can anyone name 3 of them? Not the vertical heads, but the verticals themselves. Data center, digital marketing, and sales. Bang on. Your good name, madam? Kuratul and Kazmi from Contour Software. A huge round of applause for Ms. Kuratulain Kazmi. Please, Kuratulain Kazmi, bring her giveaway. थोड़ी सी तालियां हो जाएं. Solution has served thus far. Your good name, sir? My name is Nasir Khan, 500 plus. Absolutely. Yeah, so we only had 3 giveaways, but I think there's been a lot of interest, so we are going to get international. The stage and present partner acknowledgement to CEO Mr. Noman Ahmed Saeed of SI Global Solutions and say a few words. Sir, A huge round of applause for Mr. Sayyid Sad. जितना भी आप कह लें कि सपोर्ट दी आपको जो इम्पोर्ट है हमारे कंट्री में काफ़ी मुश्किल है लेकिन थैंक्स टू आवर पार्टनर्स थैंक यू. Thank you so much, Mr. Sayyid Sajjad Ali and the entire team of Dell Technologies for your trust. We are thanks to our incredible customers for their unwavering trust and invaluable contributions toward the shared success. It's time to honor and celebrate. okay, it's time for something exciting for our customers that you must be waiting for. I would like to call Mr. Noman Ahmed Saeed, CEO of SI Global. I would like to call Mr. Atif. Okay, I would request Mr. Faiz from Sindh Police to come up on the stage. A huge round of applause for Mr. Faiz. I would like to call upon Ms. Kurutulain from Contour Software. Thank you, Ms. A huge round of applause for Ms. Kuratulain from Contour Software. I would like to call Mr. Zahir Asif to come onto the stage.
I would now like to call on the stage Mr. Zishan. Mr. Zishan Khan, if you can please come up on the stage. Thank you, sir. Sir. थोड़ी सी तालियां हो जाएं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। Mr. Atif and Mr. Zishan are the backbone of the company, so a huge round of applause for them. Thank you, sir. मलिक यासीन साहब, आप भी स्टेज पे आए सर, सर भी आए। Last but not the least, we would like to thank the entire team of SI Global Solutions for putting in their 100% to make sure that this event is successfully organized. I hope you all had a good time tonight. A huge round of applause for all the members of SI Global Solutions. They all have put in a lot of hard work to make this show successful. A huge round of applause for everyone. To recognize their efforts, we would like to request Mr. Noman Ahmed Saeed, he's already here on the stage, to present the certificates to the team members. I would like to call Mr. Shafqat Ali on the stage, please. Mr. Shafqat Ali, please come on the stage and receive your certificate. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, काफी एफर्ट लगती हैं। Mr. Shafqat Ali. I would like to call Mr. Sagar Dera to come onto the stage and receive his certificate. A huge round of applause for Mr. Sagar. Mr. Sagar Dhera. Now I would like to call upon Mr. Tariq Ansari. Please come up on the stage, sir. A huge round of applause for Mr. Tariq Ansari. Sir, Captain Amjad Noor Saab, please join us at stage. Captain Amjad Saab is also Sword of Honor, so please clap for him. Mr. Tariq Ansari. तालियां हो जाएं जोरदार। Next up is Mr. Subhan Khanzada. A huge round of applause for Mr. Subhan. Okay, I would like to call upon Mr. Ashad Shafiq on the stage, please.
Mr. Arshad Shafiq. तालियां हो जाएं. Next, I would like to invite Mr. Mikhail Soleri to come onto the stage and receive his certificate. I would request Commander Kamar to come up on the stage, please. Commander Kamar. Sir, I would like you to come up on the stage, please. A huge round of applause for Commander Kamar. Mr. Muhammad Sajid, can you please come up on the stage? I would request Ms. Ikra Nadeem to come up on the stage, please. A huge round of applause for Ms. Ikra Nadeem. A big round of applause for Ms. Aisha Sheikh. Can I call my own name? Next up is Mr. Anas Rizvi. A huge round of applause. I request everybody to please clap for this guy. He did best of the best. Okay, so Mr. Tamir Ahmed, I would like you to come onto the stage and receive your certificate. Okay, I would like to call our very own Mr. Zaman Khan to come onto the stage and receive his certificate. Mr. Zaman Khan. यार इनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, वरना चाय अच्छी नहीं पिलाएंगे फिर आपको. A huge round of applause for everyone for their stupendous effort. I would like to thank Sir Noman, Mr. Zishan, Commander Saab for coming here. तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए. Well, this event would not have been possible without the dynamic and charismatic leadership of our higher management. In recognition of his contribution in bringing this event together and for his remarkable contribution for the company, I would like to request our very own Mr. Atif Khan, Head of Sales, to come onto the stage and receive his award from Mr. Noman Ahmad Saeed. Sir, I would like you to come onto the stage. There's an award for you, sir. A huge round of applause for Mr. Atif Rais Khan. He is behind this event and he is the real face for the success of this event. A huge round of applause for Mr. Atif Rais Khan.
Okay, so thank you everyone for their participation, and it would not have been possible with all, and you all have turned up in great numbers. So again, a huge round of applause. So join us for a sumptuous feast as we gather to savor the memories and toast to the success of an incredible event. It is time for a delightful dinner filled with laughter, camaraderie, and unforgettable moments. Thank you all. Enjoy. So there's a setup at Arena Rangoli. You can have your dinner, but you have to come back here for the dinner. Thank you everyone for your contribution. Dinner का setup जो है वो रंगोली में है, वहाँ से you can have your dinner and you have to come back here. आपको यहाँ पे आके जो है वो अपना seating arrangement जो है वो यहाँ पे है. So everyone please have a wonderful dinner.